Hello bachcho, let's read the question. The question says here, the nucleic acid extracted from animal liver is loaded and run on agarose gel. After staining, it shows following pattern. If the remaining sample is treated with RNAs and loaded in gel, what result would you expect? सो यहाँ पे जो एक न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्ट होता है कहाँ से, एनिमल लिवर सेल से. दिस इज लोडेड, किसमें लोडेड होता है, लोडेड होकर रन होता है एगारोस जेल में. सो आफ्टर द स्टेनिंग प्रोसेस, दैट मीन्स आफ्टर द कलरिंग प्रोसेस, दिस following figure is following pattern is given here. This is the band pattern, this is negative and positive charge. If the remaining sample is treated, जो बच जाता है, जो ये वाला sample is treated with RNAs, इसको अगर हम RNAs and RNAs में ट्रीट होता है एंड फिर से उसको लोडेड करते हैं जेल, एंड व्हाट वुड द रिजल्ट वी हैव टू एक्सपेक्ट. So both RNA and DNA, they are negatively charged. DNA and RNA. So what are their charge? They are negative charge. Negatively charged macromolecules. Macromolecules. And they move towards the positive. So as they are having the charge that is negative charge, so for that they can easily move towards the positive charge. So they move towards positive electrode, that is anode, and the RNA, this would move faster. So from DNA and RNA, the RNA is move faster. This move faster because it is lighter in the weight and size. So it is lighter than, because this is lighter than DNA से ये क्या है, RNA लाइटर है. एंड सो फॉर दैट द सैंपल वाज ट्रीटेड विथ RNAs. अगर फिर से उसको अगर RNAs में ट्रीट किया जाता है, सो ओनली द DNA बैंड इज एक्सपेक्टेड. सो यहाँ पे RNAs में ट्रीट होगा तो फॉर दैट यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ओनली DNA बैंड आर सीन. DNA बैंड इज एक्सपेक्टेड आफ्टर द ट्रीटमेंट. सो यहाँ पे DNA बैंड देखने को ही मिलेगा. सो यहाँ पे जो है ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज द RNA, बिकॉज ये इजीली जल्दी से इजीली अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव चार्ज से. तो दिस इज नॉट विजिबल, सो दिस इज रॉन्ग, देन दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. But these are negative charge and these are move slowly other than the RNA. So these are two DNA part. So these two DNA are present because it treated with RNAs. So this is wrong because one DNA is lagged in this case. So option A is our correct answer. That is two DNA fragment are visible and they are moved towards the positive charge. So option A is our correct answer. I hope you understood it. Best of luck.